वेलकम बैक टू मार्केट एट 12। हम बात कर रहे हैं फंड इंडस्ट्री के हवाले से। मुस्तफा पाशा हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। बातों का सिलसिला एक दफा दोबारा वहीं से छोड़ते हैं। हमने बात की अब तक इक्विटी फंड्स और इनकम फंड्स के हवाले से, कुछ और टाइप्स के हवाले से मुस्तफा मैं जानना चाहूंगी कि इनकी भी ग्रोथ किस तरह की रही है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इस्लामिक फंड्स, दो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है, बट इनकी भी ग्रोथ के हवाले से बताइए। देखिए, द प्रॉब्लम और द मेजर डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फंड्स, अपने इस्लामिक इनकम फंड्स हो गए, इस्लामिक एक्विटी फंड्स हो गए, स्पेशली विद रिगार्ड्स इस्लामिक जो इनकम फंड्स होते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे रन ऑफ द मिल इनकम फंड्स होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। यू नो, दे कैन इन्वेस्ट इन TFCs, दे कैन इन्वेस्ट इन सुकूक्स, दे कैन इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे कैन मेक बैंक डिपॉजिट्स, रिवर्स रिपो, वो कुछ भी कर सकते हैं। However, an Islamic income fund is restricted by its very nature कि वो सिर्फ इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर वो प्लेसमेंट करेगा तो वो इस्लामिक बैंक के साथ करेगा। अगर वो कॉर्पोरेट डेट मार्केट में जाएगा तो वो सिर्फ सुकूक उठा सकता है। अगर वो NBFCs में प्लेसमेंट करेगा तो इट कैन ओनली टेक सर्टिफिकेट्स ऑफ मुशारका। ठीक है, तो द डेप्थ, मार्केट डेप्थ एंड लिक्विडिटी विद रिगार्ड्स टू इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स इज क्वाइट लिमिटेड। So what we see is, and secondly, the rate of returns on Islamic instruments are traditionally उनका थोड़ा सा स्प्रेड नीचे की तरफ ही होता है। ठीक है। तो what we've seen with regards to जो investments जो हुई हैं in Islamic institutions, because Islamic institutions secondary market borrowers होते हैं, तो over the last year जो हमने high interest rate environment देखा है, you've seen कि उनकी financial जो उनके cash flows हैं, जो उनकी जो portfolios हैं, चाहे leasing हो चाहे lending हो, you've seen a lot of delinquencies, defaults, तो उनके काफी उनके earnings पे pressure आया है। ठीक है। In turn, you've seen कि जो the funds who have invested, the Islamic funds who have invested with them, they have also come under pressure। तो going forward, what we would advise investors, obviously Islamic fund में जो investor होता है उसकी considerations एक और होती हैं कि he wants a different flavor and investment, उनकी perception altogether different होती है, which is I mean Sharia compliant etc. तो I mean in a pure return versus risk basis, we wouldn't advise investors to take exposure in Islamic funds, mainly because the depth of instruments and the depth of liquidity that is available to them currently in the market is still quite low as compared to आपके जो normal vanilla जो funds होते हैं। तो we would advise कि आप उन funds में जाएं, if we're talking about income funds who have exposure to high yielding corporate debt on the one hand, ज़्यादा exposure ना हो मगर they should have exposure so that उनका return वहाँ से generate हो। Then they should have exposure again to government securities. A good government securities portfolio is also essential, especially in the current environment. We think it would probably pay benefits going into 2010. And secondly, you would be looking at maintaining a good cash position of 10 to 15%, ताकि जो redemptions आएं या जो भी advantage या जो एक fast changing environment है पाकिस्तान का, उसमें से the fund is able to take advantage of that. So we would advise if investors they look at these three things, and in fact one of the things that they should be looking at is fund management. किसी के जो last year crisis हुआ था, how did the fund management team of these companies, how did they react to that situation, how did they deal with the जो massive redemptions आई थी, जो defaults हुए थे, उन्होंने कैसे deal किया, किस तरह उन्होंने manage किया, did they suspend their operations, उन्होंने redemptions बंद करी या नहीं करी। तो these sort of things if they do, analyze करके देखें और investment करें तो इंशाल्लाह I think it should yield them good returns going forward। ठीक है, equity funds के हवाले से बताइए, along with the performance of the market, इनकी performance किस तरह की रही है? देखिए, obviously I mean market is up 70-80% in 2009. So obviously equity funds have also done well. Beshak, there's you cannot deny that. However, I mean जो equity funds में जो major player वो NIT है, NIT and there are a couple other जो private funds हैं, but NIT seems to be the main player in that. So their returns have also been good. They've been in line with the market expectations जो थी। अगर market is up by 70%, जो आपके जो top performing income funds होंगे, obviously they will be outperforming the market. But mostly you've seen that returns have been in line with जो KC 100 index का return है। So if you are creating a portfolio for yourself, तो आपको you want to take exposures to many different instruments as possible. You want to diversify exposure. तो equity funds में at this point अगर हम आज देखें, we would not advise anyone के fresh exposure भी ले equity funds में. What we would probably tell them is that you concentrate on your portfolio and income funds, which we expect will continue to give high yields going forward, and then to maintain your liquidity, आप cash funds में भी exposure लें. So you will have that combination of a high yielding income fund
एंड ए स्टेबल कंसिस्टेंटली जो रिटर्न जनरेट करता है कैश फंड जिसकी वॉलिटिलिटी भी कम होगी. And then I think going forward, if we do see, suppose the security situation, we do see it stabilize, we see the market में अभी जो negative sentiment है, once that sort of bottoms out, then it would be advisable that you take that exposure into equity funds. ठीक है. In detail अभी आपने explain किया in respective funds की performance and portfolio allocation जो respectively funds के हिसाब से किस तरह करें. Outlook भी बताया कि going forward की पोर्टफोलियो एलोकेशन में किस तरह चेंजेस भी लानी चाहिए. स्पेसिफिकली मैं आपके फंड के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी. थोड़े से फीचर्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए. जो बीएमए एम्प्रेस कैश फंड है इसके हवाले के फीचर्स, इसके डायनामिक्स प्लीज शेयर कीजिए. वेल द एम्प्रेस कैश फंड इट्स ए कैश फंड, मनी मार्केट फंड है. Inshallah the IPO of it will be on the 10th and 11th of November next week. What the fund will be concentrating on is investing in a short duration instruments जो high quality हुई है. What we have done purposely with regards to our cash fund is we set very narrow investment restrictions on it to basically जो हमारा इन्वेस्टर उसको एश्योरिटी हो कि हम जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो हमारा पोर्टफोलियो होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड विल बी कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज व्हाई द फंड हैज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स बिलो AA रेटेड, जो चाहे वो बैंक्स हो गए या सिक्योरिटी हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गई. तो AA rated credit quality is the minimum investment that the fund will invest in. The second major thing that we've done for our investors is that we have agreed not to take exposure in TFCs. कि TFCs में obviously investors को खदशा होता है कि जी liquidity है, volatility है, तो we've agreed कि because the cash fund का nature is a little different than an income fund, we've agreed that there will be no TFC exposure in that. ठीक है. So the combination of liquid securities and high quality securities, what we're aiming to do is हमने अपना benchmark जो रखा है, we've kept it to the 3-month average of AA rated banks जो deposit पे offer करते हैं. Currently that we've been monitoring that benchmark for the last couple of months. That it's currently around 10.2% जो 3-month पे आपको जो suppose if you went to one of the big 5 banks जो हैं पाकिस्तान के जो 3-month आपको deposit मिलेगा. Obviously the advantage of investing with a mutual fund over for example a bank deposit is for individuals it would be के जो withholding tax लगता है आपको 10% का mutual funds के ऊपर obviously नहीं लगता. In fact you are eligible for tax credits if you make an investment in mutual funds. Secondly liquidity होती है. अगर आप बैंक में जाके if you want to get a good rate of return you will obviously have to lock in your period for a time frame of maybe 6 months, 1 year, 2, 3, even 5 years. The advantage of a cash fund is that हम लोग जो redemption करेंगे वो हम लोग T+1 पे करेंगे या T+2 पे करेंगे. So within you can take your money out anytime. There is no minimum investment period कि जी मैंने 3 महीने के लिए लगाना है, 6 महीने के लिए लगाना है. You can put the money in today, you can take it out tomorrow without any penalties. So that's the additional feature of it. ठीक. मुस्तफा फर्दर इसके फीचर्स के हवाले से हम आपसे बात करेंगे. इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के क्या बेनिफिट हैं जो इनमें इन्वेस्ट करें, उनके किस तरह के बेनिफिट्स ड्राइव हो सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे. बट इस टाइम हमारे सेगमेंट